Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Nikhil Kumar. नमस्कार मार्केट मंथ में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें लेकर के हाजिर हैं और खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित है स्टूडियो में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रकाश चावला। प्रकाश चावला जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अर्जुन। Benchmark indices a plunge on heavy foreign fund outflows. Sensex tanks 1,062 points. Nifty ends below 22,000 mark. Bank of England keeps interest rate unchanged at 5.25%. And State Bank of India's fourth quarter net profit grows 24% to 20,698 crore rupees, declares 13 rupees and 70 paise as dividend. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर बिकवाली किए जाने से घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 1062 अंक लुढ़का और निफ्टी 22,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए 5.25% पर रखा और भारतीय स्टेट बैंक की चौथी तिमाही में लाभ 24% बढ़कर 20,698 करोड़ रुपए हुआ। 13 रुपए 70 पैसे का लाभांश घोषित किया। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर बिकवाली किए जाने से प्रमुख शेयरों में मुनाफा वसूली के कारण घरेलू स्तर पर शेयर सूचकांकों में आज करीब 1.5% की गिरावट आई। अमेरिका में फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की हालिया बयानबाजी ने भी भारतीय शेयर बाजारों पर दबाव बढ़ा दिया है। बीएसई के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 1062 अंक यानी 1.45% लुढ़ककर 72,404 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएससी निफ्टी 345 अंक यानी कि 1.55% नीचे आकर 21,957.50 पर आ गया। बीएसई के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप में 2% की गिरावट देखी गई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 2.40% का नुकसान दर्ज करते हुए बंद हुआ। Benchmark equity indices plunged around 1.5% amid heavy foreign fund outflows and selling in heavyweight stocks. Recent hawkish rhetoric from certain US Fed Reserve officials has also intensified pressure on Indian equities. BSE Sensex tanked 1,062 points, 1.45%, to end at 72,404 points. The broader Nifty 50 shed 345 points of 1.55% to close at 21,957.5. From the Sensex pack of 30 companies, Larsen & Toubro, Asian Paints, JSW Steel, ITC and IndusInd Bank were among the major laggards. The share of Larsen & Toubro plunged 6%. In contrast, Tata Motors, Mahindra & Mahindra, State Bank of India, Infosys and HCL Tech were the biggest gainers. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index declined 2% while the small cap tumbled 2.4%. In sectoral indices at the BSE, all sectors ended in the red, except automobile, which rose 0.6%. Oil and gas plunged 3.4%, energy tanked 3.2%, and metals fell 3.1%. Let's have a look at how the rupee performed today in the foreign exchange market. विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.51 के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में बढ़त के साथ 105.63 पर कारोबार कर रहा था। प्रकाश जी, आज मार्केट की जो हमने चाल देखी, जिस तरह से मार्केट में गिरावट दर्ज हुई सेंसेक्स में 1062 अंक की, इस पर क्या कहेंगे आप? मार्केट में हमारी भारतीय मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी का अभी दौर चल रहा है जी। बहुत ज्यादा वॉलेटिल, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। तो उसी के चलते ही कुछ डोमेस्टिक इश्यूज हैं जो मार्केट को कंसर्न दिए हुए हैं, बट ऐसा इकोनॉमी से ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन वॉलेटिलिटी काफी बढ़ी हुई है और काफी लोग, हमारा इन्वेस्टर्स, जैसे मैं अभी पीछे आपके कलीग से ही बात कर रहा था कि भाई हमारे यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो है और काफी जागरूक हो गए हैं। वो काफी कुछ प्रॉफिट बुक करके अभी ऑन द साइडलाइन होना चाह रहे हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग काफी हो रही है।
को बुक कर लेते हैं, थोड़ा ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, कल क्या होता है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स एनालाइज करता है। और चूंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे आपने अपने बुलेटिन में पढ़ा कि वो काफी हैवी सेलिंग हो रही है जी, तो उसके चलते, लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो सपोर्ट किए हुए मार्केट को। रिटेल इन्वेस्टर्स भी खरीदता है लेकिन साइड लाइन्स पे है। तो ओवरऑल जो माहौल है कॉशन का है और थोड़ी सी सावधानी बरतने का है, यही माहौल चल। यानी हजार अंक से अधिक अगर गिरावट हुई है तो इसमें निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, घबराहट नहीं। मैंने जैसे जिक्र किया, हमारा इन्वेस्टर अपना स्मार्ट हो गया है जी। अब वो इन्वेस्टर ने घबराता नहीं है। ये 1000 क्या, अब और भी 2000 गिर जाएगा, पैनिक नहीं आएगा। अभी ठीक है, हमारे हेडलाइन के लिए अच्छी बन जाती खबर, लेकिन पैनिक नहीं है मार्केट में। 73,000 पे, 72,000 पे, 70 के प्लस में चल रही है मार्केट। और हमारे जो पी रेशियोज है हमारे मार्केट के, वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा चढ़ी हुई थी। वो भी एक अपने आप में एक रीजन हो सकता है, लेकिन वो रीजन अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है। फिलहाल तो वॉलेटिलिटी है। थोड़ा सा आपको मालूम है कि अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल सरचार्ज एक माहौल सा बना हुआ है, तो थोड़ा सा सावधानी बरत रहे लोग, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। Prakash, you would say that volatility, the VIX is telling us it went up by 6.5%. It's 18.2 right now. It'll continue till June 4th, and you see a 2,000-point decline. That's your prediction for the loss in the market at current levels, or do you see the market going down further till June 4th? No, what I said was that if it goes up go down by 2,000 points, I won't be surprised. It won't, it may not, I am not very sure about it. But right now, because when the market is in the middle of volatility, it's very difficult to guess which way it's going. That's why, that is the name of volatility. People are not really sure about it. People want to play safe. So in that context, investors are booking profit where it's possible. In fact, investors have become so smart, some of them are even hedging their risk in the cash market by going through options and futures and trying to play it. But that's risky. I would not advise people to go for that, because even the SEBI study, if you go in for any brokerage account, there's a forewarning which tells you that 9 out of 10 people who do this kind of derivative trading and all that end up losing money. So I would not advise people to go for that. Don't panic. Hold on to good shares. Volatility will come and go. It's not going to stay long. What we're also finding from retail investors is their increased participation in the derivatives market that you mentioned right now. Today, Thursday being the weekly expiry as well, we have the monthly expiry for derivatives. But just coming back to the cash market, you mentioned about FIIs, FPIs. They were net sellers to the tune of almost 7,000 crore rupees in the equity market today. It was offset to some extent by DIIs being the net buyers to the tune of 5,642 crore rupees. But what happens if DIIs also start booking profits with FIIs? Do you see the markets correcting even deeper? Well, as I said, no, there is no panic situation. The FII is selling right now. That doesn't mean they'll go on selling. And because what happens is in the entire the market valuations, the game of market valuations also plays out. So yes, FIIs have been selling. In fact, in entire since January, the FIIs have been net sellers to the extent of something like 46,000 crore rupees. Excepting 1 month, most of the months they have been selling out. But well, that's the nature of the market. And that doesn't mean they'll go on selling, and that doesn't mean that DIIs will join like that. So it's a kind of who plays out, who is a smarter guy, So let's see how it plays out. But as I said, I keep repeating, there's no cause for panic. प्रकाश, अभी आपने बात की घरेलू निवेशकों की संख्या बढ़ने की लगातार। इस वर्ष की अगर हम बात करें तो लगभग 31 लाख खाता धारकों की संख्या 5वें महीने तक बढ़ चुकी है, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। यानी कि काफी मजबूती दे रहा है घरेलू स्तर पर निवेशक भी। तो जो बाहरी स्थितियां, उनका असर आगे पड़ने की संभावना रहेगी इसके बावजूद भी। बाहरी स्थितियां माने कि जो विदेशों में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो तो जरूरी है। मार्केट हमारी जो मार्केट है, एक डोमेस्टिक कारणों से
इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा जिसको हम आजकल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जी, अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी अच्छी नहीं चल रही मिडिल ईस्ट में। आज ही डिस्पाइट यूएस इंसिस्टिंग on Israel not to go too far, but Israel is doing what it wants to do. So in that context, the geopolitical situation is not changing for better. So उसको हम दरकिनार तो नहीं कर सकते ना। तो ये जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, अब रिटेल पार्टिसिपेंट्स को भी मालूम है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है उससे मार्केट में फर्क पड़ता है जी, और जब फर्क पड़ता है तो थोड़ा सावधानी, तो इसलिए अवेयरनेस बढ़ जा रहा है। और लेकिन वो तो गिवन है, उसका तो नतीजा आप पे पेट्रोल भी रहता है, क्रूड प्राइसेस पे भी रहता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे भी रहता है, ये सारी चीजें इकट्ठे चलती हैं। So the FIIs, FPIs, they tend to arbitrage in markets also. They are not just investing in India. There is China. There are other South Asian markets as well. And what's the outcome of geopolitics is primarily on commodities like oil that you mentioned right now. So what's the thinking of these hedge funds, who are investing in markets like India? When do they decide to book profits? When do they decide to enter with FII inflows, exit with FII outflows? What is that we need to know as retail investors who are tuned into this program? Well, it all depends on the on how the events unfold. It is not that they have something preconceived in their mind that we'll buy on Wednesday and we'll sell on Thursday. It doesn't happen like that. So it is always their decision follows unfolding of events. Now, the events could be political, events could be economic. You mentioned about Bank of England keeping its rates unchanged. Now, there is always an eye on Federal Reserve, how they move, the inflation, how inflation is panning out. So, the inflation trajectory is not going the way people expected. So, if these events put together would weigh upon the FIIs when to sell, when to buy, when to do arbitrage, which market to, because there is always a big arbitrage kind of opportunity vis-a-vis China versus other markets, because China economy is so huge. So the arbitrage opportunity, the other opportunities depend on the way events, economic, political and other events unfold. Prakash ji, when we talk about large cap stocks, if you look at mid cap and small cap, they either outperform or underperform, and typically what we are seeing now with the large caps falling is that mid caps and small caps are falling even more. So mid caps fell by 2%, small cap index fell by 2.4%. What would you advise retail investors in India at this stage where markets are correcting, there is volatility? Actually, typically the large caps are supposed to be defensive, so to speak. So defensive, when you have, there are defensive, if you categorize by, in terms of market capitalization, there are defensive category. Large cap are typically supposed to be defensive stocks. So is the case with certain sectors. Like IT is supposed to be defensive generally. The FMCG used to be defensive. So my advice to, and small caps also, is in a broader sense, at times it could become risky. So one should be not too much chased growth and at the risk, at the cost of your safety of your investment. So be sure about it. And when you say large cap, go for defensive. It's not very difficult to make out. Big time names are there. They may not give you huge kind of returns, the kind of fancy returns which you might expect from small caps. But it is in these kind of circumstances that we are in today, it is advisable to go in for large caps. Index funds? Well, index funds also give you kind of a diversification because your risk gets diversified. It's a basket of, So index fund also could be one of the ways to, kind of hedge your risk. प्रकाश जी, अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बड़ी कंपनियों के आर्थिक मोर्चे पर जो आंकड़े हमें नजर आए हैं काफी हद तक सकारात्मक दिखे हैं, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को प्रेजेंट सिनेरियो में किस तरह की गति को दर्शाते हैं? जो आपने जिक्र किया, जैसे अब आपने अपने बुलेटिन में एसबीआई का जिक्र किया, एक दो कंपनियों का जिक्र, उनके नतीजे जो आए हैं, अब नतीजे क्यों अच्छे हैं?
जी। अच्छे नतीजे आए। तो नतीजे इसलिए अच्छे आते हैं क्योंकि ग्रोथ होती है इकोनॉमी में, और ग्रोथ के दो रीजन होते हैं और उसके इम्पैक्ट भी दो होते हैं। एक बड़ा रीजन होता है कंजम्पशन डिमांड, जो एक उपभोक्ताओं की डिमांड है। जब उपभोक्ताओं की डिमांड होगी तो डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई भी उसी साइड से आनी चाहिए। तो एक जब सप्लाई की डिमांड जरूरत पड़ती है तो फिर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोनों पहिए होते हैं, डिमांड का पहिया और इन्वेस्टमेंट का पहिया, एक ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अभी क्या हुआ है कि कंजम्पशन डिमांड बड़ी अच्छी रही है, कंसिस्टेंटली सेकुलर तरीके से अच्छी रही है, और उसके चलते क्या हुआ है कि क्रेडिट ग्रोथ की डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बड़ी अच्छी है। अब इन्वेस्टमेंट आ रहा है क्योंकि सप्लाई मैच करने की कोशिश की जाए जी। तो ये एक अच्छी खबर है, वर्चुअस साइकिल जिसको बोलते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारत की विकास दर 6.5 से 7% तक रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जो कि एक अच्छी गति को प्रदर्शित कर रहा है उनके हिसाब से, और 1 दशक तक ये चीज बनी रह सकती है। तो ये मार्केट को पॉजिटिव में ले जाएगा? जरूर नहीं, हमारे मार्केट का सारा दारोमदारी ग्रोथ पे है, और हमारी जो जिसको इंडिया स्टोरी बोलते हैं उसका दारोमदारी हमारी कंजम्पशन डिमांड है। हमारा जो प्रोफाइल है हमारे पॉपुलेशन का एस्पिरेशनल ग्रोथ है हमारी, और लोग बाग एस्पिरेशन लिए हुए हैं, हर आदमी ग्रो करना चाह रहा है, एज प्रोफाइल अच्छा है, कंजम्पशन स्टोरी है, ग्रोथ है, इनकम लेवल बढ़ रहा है। तो उसके मद्देनजर तो एक चौथा साल लगातार होगा इन अ रो कंसेक्यूटिवली जब हम 7% से ऊपर ग्रो कर रहे होंगे, तो ये एक सुखद खबर है। Let's have a look at fourth quarter result from State Bank of India. SBI has reported 23.98% growth in the March quarter standalone net profit at 20,698 crore rupees as against 16,695 crore rupees in the year ago period. The lender said in a regulatory filing that net interest income NII for the said quarter stood at 41,655 crore rupees, up 3% on a year-on-year basis. The operating profit for the fourth quarter of the financial year 2023-24 stood at 28,748 crore rupees. The gross non-performing asset GNPA for the reported quarter stood at 84,276 crore rupees, down 7% on a year-on-year basis and 3% quarter-on-quarter basis. The net NPA was reported at 21,051 crore rupees, down by 2% on a year-on-year basis and 6% on a quarter basis. The bank has reported a net profit of 61,077 crore rupees for the financial year 2023-24, which improved by 22% year-on-year. The board has also recommended a dividend of 13 rupees and 70 paise per share. The record date for determining the eligibility of shareholders who will receive the dividend on equity shares is 22nd May 2024, and the dividend payment date is fixed on 5th of June 2024. Prakash, without going into a specific share, in this case State Bank of India, they seem to have reported exceptional numbers, not only in terms of net profit or revenue, but the net interest income, the lowering of the gross non-performing asset. Bad debts have come down. Yet in the background for this sector, you have RBI demanding extra provisioning for lenders who are into project financing. What is the outlook for banking? They have seen exponential growth in terms of valuation in the stock market. Well, first, the reason why they have done so well. The reason why they have done so well is the improvement in net interest income and lower provisioning. These two things have, and matched by a good credit growth. So after all, what is the business for a bank? Bank is borrowing and lending. So if there is a demand for borrowing from the banks, the business environment is quite good. So the banks are right now in a position where the business environment for them is very good. And going forward, if our economy continues to grow by 7%, the way it was doing in the last few years, there is no reason that the banks will not do very well, because the credit growth will continue to have a good trajectory. Demand for credit will increase. As far as the RBI's insistence that infrastructure projects, the project finance need better provisioning, well, it's the job of RBI to go in for a conservative kind of approach, which is what a regulator should do.
And there's nothing to be alarmed about it, nothing to be concerned about it. After all, it is only a conservative approach which stands you in bad times in good state. अब एशिया और यूरोपीय बाजार पर नजर डालते हैं। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया। हांगकांग शेयर बाजार का हैंग सेंग इंडेक्स 1.21% की बढ़त में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.82% का उछाल आया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स में 0.04% की तेजी दर्ज हुई। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.20% की गिरावट आई और जापान के निक्केई सूचकांक में 0.34% की सुस्ती देखी गई। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में भी आज मिला जुला रुख रहा। जर्मनी का डेक्स 0.32% की बढ़त में था और लंदन के फुटसी में 0.04% की तेजी आई। वहीं दूसरी ओर अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। प्रकाश जी, इन बाजारों पर आपके विचार क्या होंगे? जो विदेशी बाजार हैं मोर और स्टेबल चल रहे हैं। अगर आप डाउ को भी देखें, पिछले 6 दिन में विनिंग स्ट्रिक था जी। अब थोड़ा डाउ फ्यूचर्स आज बता रहे हैं थोड़ा सा उसमें हो और कुछ एक मिक्स ट्रेंड से बोल रहे हैं, तो मोर और लेस स्टेबल है। वॉलेटिलिटी वहां ज्यादा नहीं, हमारे यहाँ थोड़ी सी ज्यादा है और लेकिन कंसर्न जो है इन्फ्लेशन का अभी भी बरकरार है। वहाँ जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है विदेशी बाजारों में वो अभी बरकरार है। जियो पॉलिटिकल का भी पॉलिटिकल सिचुएशन का भी जो है उसका भी कंसर्न जो है बरकरार है। तो बाकी जो विदेशी मार्केट्स हैं वो काफी हद तक वाइब्रेंट सिचुएशन में है और ओवरऑल जो माहौल है वो एक कॉशन का तो है। ओके। On that theme that European markets are dictated by inflation figures now, we have a story on the Bank of England interest rate as well, which is also a headline story. The Bank of England has today left the key rate unchanged at 5.25%. The Bank of England said that its Monetary Policy Committee voted 7-2 to keep rates at a 16-year high of 5.25%. The MPC has now kept rates on hold at 6 meetings in a row, but it hinted that a first cut since March 2020 at the onset of the COVID-19 pandemic could come as soon as its next meeting in June. The Bank of England has added that it would be watching the next round of economic data closely. The central bank has said that the committee will consider the forthcoming data releases and how these inform the assessment that the risk for inflation persistence are receding. It further added, based on these assessments, the committee will keep under review for how long bank rate should be maintained at its current level. Now, we know that the Russia-Ukraine war is a principal factor why Europe has faced inflation, including England, where it has certainly affected the electorate there. How are they dealing with inflation right now? Because it seems that the intensity of the war has not come down, it's only gone up. Well, they are trying to use all the monetary tools, their central banks, to keep a leash on inflation. And the reason why they have kept the rate unchanged, Bank of England today, while there was expectation of a rate cut, and the Bank of England has clearly stated that they need to, the results are not to the extent expected when it comes to fighting inflation. And so it's a wait and watch story on inflation. And inflation is an animal which is difficult to tame at times. It is not an animal which is easy to tame, which has been shown for the last several months, almost more than a year, that these central banks have been trying to somehow get around this animal called inflation. But let's see how they are able to handle it. And the other reason is that they need to work on supply line, supply chain, and the supply chain remain disrupted because of the geopolitical situation. Well, let's have a look at the U.S. market now. The Dow Jones Industrial Average ended higher yesterday, stretching its winning streak to 6 straight sessions and closing above 39,000 points for the first time in 5 weeks, as investors kept betting on supportive U.S. monetary policy. The Dow Jones Industrial Average rose 0.44%. On the other hand, Nasdaq Composite Index lost 0.18%. The S&P 500 ended almost a flat. Inflation has been sticky in the U.S. as well, but they have not been affected like Europe, obviously, because they're not dependent upon Russia for key commodity imports. But do you feel that maybe the COVID-19 pandemic is one of the reasons why, especially the subsidies offered by President Biden,
is the reason why the money supply has gone up so much that there is inflation. And how do you see them make the inflation from sticky to unsticky? Well, as I said earlier, in the US, what has happened is one was the opening of the purse strings. They went all out to pump around the economy after $3 trillion. Yes, that was one of the reasons. The other reason was suddenly this outbreak of the war. And supply chain got disrupted. The two things combined together to make it sticky. How it's going to pan out, as I said earlier, depends on several variables and situation in the Middle East and inflation. But the U.S. economy, there's a hope that the things might turn for better sooner than what may happen in Europe. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने वरिष्ठ चालक दल के 25 सदस्यों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के इनके एक साथ अवकाश पर जाने के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सेवाओं पर असर पड़ा है। आज भी 85 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। प्रभावित यात्री पूरा किराया वापस ले सकते हैं या अपने यात्रा कार्यक्रम को बाद की तिथि पर भी तय कर सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि वो आज मूल सहयोगी कंपनी एयर इंडिया की मदद से 20 यात्रा मार्गों पर 283 उड़ानों का संचालन करेगी। Let's have a look at the crude oil market. Now, oil prices increased today due to declining U.S. crude inventories, coupled with an uptick in refinery intake and heightened Chinese imports last month. These factors bolstered demand projections for the world's top two crude-consuming nations. Brent crude oil futures was up by 0.89% to trade at $84.32 per barrel, whereas West Texas Intermediate WTI was higher by 1% at $79.78 when reports last came in. It seems the China factor has also figured into oil now, along with gold, because that's going to be the next story that's going to be read. Why is China consuming so much if their economy is not growing by what has been forecasted? So what is really driving oil prices right now, and do you see that coming down or going up? Well, oil prices, let's be fair about it. The oil prices have not behaved in a manner which can cause a big alarm, despite problems in the Middle East, mind you. And one of the reasons why it has not behaved the way it was feared was that because the U.S. is not allowing Israel and to go kind of too much, and U.S. and its allies. They are trying to keep a control over the situation in the Middle East. That gives confidence to the commodity market, especially the oil, that things will not go out of control. And U.S. is a key supplier as well. Well, supplier and the consumer, and obviously, and when it comes to China, China is a huge consumption story itself. Even if the growth is not to the extent it was there, but at the end of the day, they consume a huge amount of oil, as is the case in India. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार के लिए सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का मूल्य 26 रुपए यानी कि 0.04% बढ़कर 71,153 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं जुलाई अनुबंध के लिए चांदी 605 रुपए यानी कि 0.73% के उछाल के साथ 83,599 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। प्रकाश जी, आप बताएं कि जो सोने में लोग निवेश करना चाहते हैं उनको किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, इन्वेस्ट करें या फिर अभी सब्र करें? अभी सब्र कीजिए, क्योंकि पहले आपने गड़बड़ कर दी है। आपने सोना 75,000 तक लेके चले गए थे, ऑलमोस्ट टचिंग 75,000। तो उस ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि उसमें सोने की मार्केट भी जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक्स में आ गया है। आपको इंटरेस्टिंग होगा जानकर कि कमोडिटी मार्केट में भी रिटेल इन्वेस्टर बहुत तेज हो गया है, लेकिन बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड मार्केट में भी इस तरह से मत कीजिए कि आप 71 पे लीजिए। और गोल्ड है, अच्छा रहता है, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। प्रकाश जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। And let's have a look at the closing headlines now. Benchmark indices plunge on heavy foreign fund outflows. Sensex tanks 1,062 points. Nifty ends below 22,000 mark. Bank of England keeps interest rate unchanged at 5.25%. And State Bank of India's fourth quarter net profit grows 24% to 20,698 crore rupees. Declares 13 rupees and 70 paise as dividend. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.